सो क्विकली ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम का। सो इक्विलिब्रियम से मतलब क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेइंग इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, डायनामिक नेचर, ये सारी बातें पढ़नी है। मेन पढ़ाई शुरू होगी लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ मास एक्शन एंड देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहले कुछ इंट्रोडक्टरी बातचीत करेंगे हम लोग। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? चारुल? तो जिसमें डेल्टा एस टोटल इज 0 तो उसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। नहीं बेटा, डेल्टा एच टोटल नहीं, डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है। तो डेल्टा एस delta s is 0, right? Delta s is 0, but that is a very out of context definition. Tell me something more relevant. Delta s is 0, is equilibrium is fine. It doesn't have any physical meaning. Equilibrium का मतलब ये कोई खास मतलब नहीं निकलता, या delta g 0 होता है, even that is an equilibrium state, that is okay. What is equilibrium? Equilibrium का मतलब क्या होता है? इक्वल से कुछ रिलेशन है इसका, इक्वल कंसंट्रेशन और कांस्टेंट कंसंट्रेशन at a certain point of time or constant amount after certain amount of time is known as equilibrium. Quickly लिखेंगे. So equilibrium refers to constant certain amount after a certain time, and that amount remains equal or same. So can you repeat? I said equilibrium refers to amounts getting constant or same or equal after a certain period of time. So delta S is 0, equilibrium, delta G is 0, equilibrium. They are an offshoot. They are not main topic. इसको वैसे तुम रख सकते हो. Equilibrium is coming derived from equal word. So the concentration or amount is equal at all the times post reaching the equilibrium. Next point लिखेंगे. Concentration is equal or remaining constant after reaching equilibrium. Okay, Dhruv, your definition is right, but the rate of forward reaction equals the rate of backward reaction is also equilibrium. अभी वहां पहुंचे नहीं हम लोग, इसलिए हम लोग थोड़ा सिंपल डेफिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है ध्रुव? So this is one point. Point number 2 is equilibrium is primarily of two types. One is static equilibrium, another is dynamic equilibrium. Static and dynamic दिखाएंगे ऐसा. Static equilibrium and dynamic equilibrium. Static equilibrium में क्या दिख रहा है तुमको? What is your observation? Equal force on both the sides. On both the sides. So neither horse is changing its position nor the human being. दिख रहा है ना ये? Yes, sir. So things are same, but nothing is moving. Horse and human being both are oscillating to their mean position, but nothing is moving either in the forward in the backward direction. बोल सकते हैं ना ऐसा? इस किस्म के सिचुएशन को आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं. क्विकली लिखेंगे, जल्दी जल्दी. Nothing substantial. फास्ट लिखेंगे. So when nothing moves in either direction and amounts remain the same, then the type of equilibrium is a static equilibrium. You have written
नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए आप। नीचे वाला डायग्राम में लिखा हो डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो इफ यू कैन सी वेरी केयरफुली, देयर आर Reactant equal to product. yes, there are two heaps of sugar. मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर 100 ग्राम शुगर है, 100 ग्राम शुगर, और यहाँ पर 50 ग्राम शुगर दिख रहा है आपको। वैसे ही कोई भी वैल्यू ले लिया हमने। सो एंड्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये वाला एंट इधर से इधर 5 ग्राम शुगर लेके जा रहा है, और इधर से इधर वापस 5 ग्राम शुगर आ जा रहा है। सो दिस इज हैपनिंग इन हाफ एन आवर। सो आफ्टर हाफ एन आवर, पोस्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, could you tell me यहाँ पर शुगर का क्वांटिटी कितना होगा? Will that be 100 minus 5 plus 100 5? gram. Will that be 5? Will that be minus 5 plus 5 equal to 100 gram? Will that keeping constant? Is that keeping constant? Yes. So after half an hour, the amount is again keeping constant, but then there is some degree of dynamism. जितना जा रहा है उतना वापस replenish हो जा रहा है, इसलिए dynamic तो है ये. What about the right hand side one? 50 minus 5 plus 5 हो जा रहा है ना ये? Yes, sir. So amounts are again keeping constant, but with a certain degree of difference that certain amount is going out of this heap and the same amount is being replenished back. So such type of equilibrium in which the amount remains the same, but with a degree of dynamism is known as dynamic equilibrium. Use your own language, nothing big deal. ये दिखाएंगे अपने language में. फटाफट पास दिखाइए. So equilibrium is of two types, static and dynamic. Is that fine? Yes, sir. Right. Yes, sir. Okay. Now next is कि कुछ डेफिनेशन है जो हमने अपने लैंग्वेज में बोला था। क्विकली तुमको जो रेलेवेंट लगता है, जो स्कूल में टीचर कराते हैं, उसको फटाफट फास्ट लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे। Sir, हाँ अच्छा। sir, could you please tell me what you did till now? Nothing, I've just defined what is equilibrium. वही वाला जो डेफिनेशन में बताया था मुझे, वही वाला, तो इन 3 पॉइंट आ रहा है, जस्ट राइट देम। एंड देन इक्विलिब्रियम इज ऑफ 2 टाइप्स, डायनामिक एंड स्टैटिक, बस इतना ही बताया। Okay, sir. यस। लिख लिया आपने इसको? नेक्स्ट No, sir. फास्ट लिखेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी। Done, sir. Next is equilibrium in physical process. Physical process, you understand what is a physical process? फिजिकल प्रोसेस के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। देन लिक्विड गैस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये अपने आप में फिजिकल इक्विलिब्रियम। सॉलिड गैस में डायरेक्टली सबलाइम कर रहा है, इट इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम। एक लिक्विड डिसॉल्व हो रहा है किसी, या एक सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है किसी लिक्विड में, दिस इज इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। एक गैस डिसॉल्व हो रहा है किसी लिक्विड में, दिस इज अ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, so it is again an equilibrium. So there are various types of equilibria associated in physical process. Why it is termed as physical? Physical क्यों बोलते हैं इसको? Because no new chemical bond is formed. It is just the physical bond, hydrogen bond, etc., which is causing the equilibrium. So no chemical bonds are involved here. That is why it is a physical equilibrium. पहले basic intro डाल दो इसका. So no chemical bonds are involved in these kind of equilibria. So आप क्विकली इन बातों को लिखने के बाद एक एक करके दिखाएंगे। मेरे ख्याल से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लो एक बार। पहला क्या दिख रहा है? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्या खास बात नजर आ रही है यहाँ पे? एक बार चारों इसको पढ़ दो बेटा। क्या?
For any pure substance at atm pressure, the temperature at which the solid and liquid phases are in equilibrium is called normal MPT or freezing melting point. point. It is dynamic in nature, that is, rate of melting is equal to rate of freezing. The amount remains constant. Okay. Next is liquid vapor equilibrium. So liquid For vapor any equilibrium. हाँ. बोलो मैं for सुन रहा हूँ. any pure liquid at atmosphere, the pressure 1 atmosphere or 1.013 bar, the temperature at which I and V are at equilibrium is called normal boiling point. It is dynamic in nature, that is, water and water vapor are in equilibrium at 100 degrees Celsius and 1 atmosphere Right. So pressure. this is At the the kind of. and Yeah, carry the on. rate of okay, Hmm. and the rate of evaporation is same as rate of condensation, so Yes. amount remains constant. Yes. So what is happening is liquid and gas phases. The water in liquid state and water vapors are in equilibrium with respect to each other. This is referring to liquid vapor equilibrium. Ordinary stuff. Quickly just see this. Solid liquid. Solid liquid का example क्या हो जाएगा बेटा? You take ice and if you melt ice, it is an example of solid liquid equilibrium. Ordinary. Next, what is the third type? Solid to gas equilibrium, solid vapor equilibrium, something getting completely sublimed. You can go through. Charul. Substances like iodine, camphor, ammonium chloride, when taken in a closed container, after some time they coexist in equilibrium with their vapor or gaseous state, that is Gases. sublimation. Yes. So this is another kind of equilibrium. In equilibrium involving solid or gas and liquid. A solid and liquid is a solution equilibrium. As I told you, salt or sugar being dissolved in water. Another is gas and liquid. Gas and liquid is discussed with the help of a law known as Henry's law. Underline this because some of the school straight away ask what is Henry's law. ये लिख लो, ये NCERT का line है. This is in between the lines. I need to write this. Quickly write this. This is important. ये FAQ कैटेगरी है, ये पूछते हैं स्कूल के एग्जाम में. What is Henry's law? Precisely जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है. What is Henry's law? हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है ये लिखेंगे. लिख लिया आप लोगों ने? No, sir. Done. हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या लिखा है अनन्या? So if I talk about what Henry's law is, Mhm. it states the mass of gas dissolved in a given mass of solvent at any temperature T directly proportional to the pressure of the gas above the solvent. Okay, so we have suppose a closed container here and certain amount of say water is present and then carbon dioxide gas is inserted into this liquid water and the pressure of carbon dioxide maintained is 1.5 atmosphere. दिखाएंगे अपनी कॉपी में. This is situation number 1. Situation A.
and let the mass of carbon dioxide present in water is x gram, kilogram, कुछ भी हो सकता है. We take an identical scenario, same water, same amount of water, same container, same carbon dioxide gas injection. Let the pressure of carbon dioxide gas is equal to 580 and this time पढ़ा के 5 atmosphere कर दिया. This is situation number 2. Situation B. Let the mass of carbon dioxide gas dissolve in water. This time is Y. पूरी बात दिखाएंगे. So we have kind of two situations, A and B. Situation A has water being injected with a gas carbon dioxide at a pressure of 1.5 atmosphere. And the mass of carbon dioxide present or dissolved in water is X unit, maybe whatsoever. And situation B, pressure of carbon dioxide gas is deliberately increased to 5 atmosphere, and the mass of carbon dioxide gas getting dissolved in water is observed to be Y, whatsoever the unit is. So X is bigger than Y, lesser than Y, equal to Y. Cannot say data insufficient. I will ask the question, जिस बच्चे से पूछूंगा वही आंसर करेगा. Do you understand मैंने क्या क्वेश्चन क्रिएट किया है यहाँ पे? चारों एक बार क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करके बताओ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है. So in situation A, we have injected CO2 gas in some volume of water with pressure 1.5 atmosphere, and the CO2 gas released is the mass of CO2 gas released is taken to be as X. In The mass of situation CO2 present in solution or in water in situation A is X. It's not released. ठीक है? Okay, sir. Hmm. In situation B, the volume of water is the same, and this time CO2 is injected with pressure 5 atmosphere, and the mass of CO2 is Y. So and the question states Which is bigger, is X or X Y? greater than Y? Yeah. Is X B greater than Y, option. less than Y, or equal? So Sir, B option. natural option B तो नजर आ रहा है सब लोगों को. जब प्रेशर ज्यादा कर Yes. देंगे तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंजेक्ट हो जाएगा ना. So mass of carbon dioxide Yes, getting sir. dissolved is more. So this is plain common sense. Yes, So we can safely say mass of a gas is directly proportional to the pressure of the gas. बोल सकते हैं ना. yes, sir. Yes, sir. तो इसी बात को हेनरी ने अपने लॉ में एक्सप्लेन किया था. He said pressure of a gas is directly proportional to mole fraction of the gas dissolved in a given liquid such that P is equal to KH chi, where KH is Henry's constant. लिखेंगे ऐसा. This is Henry's law. ये स्टेटमेंट हो गया. दिखाएंगे पूरी बात को अपने नोटबुक में. Excuse me, sir. Yes, yes. The X is the mole fraction. Chi is the mole fraction, and our X was amount in gram. They are Okay, two sir. different X, not same. There is a question. अनन्या यही क्वेश्चन है बेटा. Yes, sir, but I am still No. not able to comprehend. No, see, the point is this X is X gram, and this is chi. This is not X. इसको mole fraction बोलते हैं. So what is the question now? Yes, sir, like mole fraction kaha se aaya, like. No, see, the point is this is actual statement. तो थोड़ा तुम्हारे book में distorted statement है. Pressure is directly proportional to mole fraction of a gas. ये actual statement है. What is mole fraction? Number of moles. Mole fraction, partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas A. Mole fraction is number of moles of A divided by total number of moles. Right? Yes. Yes, sir. Number of moles of A is weight or mass of A. अपने language में mass of A divided by molar mass divided by total number of moles. So this is directly proportional to mass of A divided by molar mass into total number of moles.
So pressure of A is basically what? Pressure of A is basically directly proportional to mass of gas A. So ये simplified version है इस law का. You understand? You have to Yes. study this law in class 12th also. तो वहां पर हम यही वर्जन पढ़ते हैं इसका. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. तुमको मेरे ख्याल से आकाश ने पढ़ाया होगा. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन rather than mass. नहीं सर ये नहीं बताया था. Okay. So pressure is directly proportional to mole fraction and pressure is directly proportional to mass are kind of the same statement. They are interderivable. एक से दूसरे को derive कर सकते हैं. Is that fine? Yes sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. ये वापस आ जाइए. यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे वो हमने ये देखा था हेनरीज लॉ. क्या हो गया? व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. ये लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन. Whenever rate of forward radiation exactly equals rate of backward radiation, the point of time is known as chemical equilibrium. स्टेटमेंट लिख लिया आपने? No, sir. केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या कांस्टेंट हो गया है यहाँ पे? इज इट गेटिंग कांस्टेंट? Yes, sir. क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट की तरफ टेंड कर रहा है, अप्रोच कर रहा है? यस. सो एट और पोस्ट अचीवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दे बिकम कांस्टेंट. लिखेंगे. समझ आ रही है इतनी बात? Yes, sir. So केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग. केमिकल इक्विलिब्रियम में एंटर करने से पहले we will write the law of mass action. लिखेंगे ऐसा. Law of mass action. Any child knowing the statement of law of mass action? This is a dialogue based class. This is not monologue. मैं बोलता हूँ और तुम सुनते हो. The law was proposed by a pair of scientists, Gullberg and Weig, way back. They stated that stated what? The rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses. ये exact statement है. Active masses of the reacting substances, reacting species, substances raised to the powers or exponents of their stoichiometric coefficients. Efficients. ठीक है. अनिका है क्लास में? Yes, sir. अनिका बेटा एक बार स्टेटमेंट पढ़ो. क्या? Rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting species raised to the powers of their stoichiometric coefficient. Right. So now let us hypothesize a reversible reaction. A moles of A reacting with B moles of B
and thereby giving rise to C moles of C and D moles of D. We hypothesize a reaction like this. Small a, b, c, d are stoichiometric coefficients of capital A, B, C, D mentioned. So this is forward reaction and this is backward. So according to law of mass action, Courtesy law of mass action, the rate of forward reaction would be directly proportional to concentration or active mass of A raised to the power A multiplied by active mass or concentration of B raised to the power B. Active mass एक टर्म आया यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कर लेना. Active mass is something which is directly proportional to molar concentration, and active mass is equal to activity coefficient into molar concentration. And in case of a dilute solution, the value of activity coefficient is 1, so active mass is as good as concentration. ये एक sideways footnote है, इसको डाल के रखना, side note है ये बात NCERT में मेंशन है, मैंने तुम्हें एडिशनल एक्स्ट्रा कराया, लिख लेना इसको, वहां सीधे कंसंट्रेशन से बातचीत की गई. So basically they are same thing in case of diluted solution. So this is statement 1, active mass is directly proportional to molar concentration. So active mass is equal to activity coefficient into molar concentration. In case of a diluted solution, activity coefficient is 1, so active mass is equal to concentration. Concentration is, which you know very frequently, you use this as molarity. Mostly molarity से मतलब होता है हमारा. So concentration is molarity most of the cases. We understand? Yes, sir. Rate of forward reaction is directly proportional to AA, BB, and what is rate of backward reaction? This would be directly proportional to C raised power C, the coefficient, and D raised power D, and it is the product of these two. Is it fine? The rate of the reaction means the speed at which the reaction is happening. Yes, the speed at which either reactant is getting decomposed or product is getting formed. Okay. एक छोटी बात हम लोग और करेंगे यहाँ पे, AABB. I could have talked directly, but तुम बहुत छोटे बच्चों, तो तुमको मैं बिल्कुल समझाते हुए करता हूँ. मान लो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोलर है, इसका 50 मोलर है. आफ्टर हाफ एन आवर इसका कंसंट्रेशन जो है, और ये 0 कुछ भी नहीं, आफ्टर हाफ एन आवर इसका कंसंट्रेशन घट के 2 मोलर हो गया, ये 5 मोलर हो गया, और ये बढ़ के 40 मोलर हो गया, और ये बढ़ के 50 मोलर हो गया. ऐसा एक सिचुएशन लिया हमने. तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है ए का, 10 और फाइनल molar, इवेंचुअल क्या है? 2 molar. मतलब ए का कंसंट्रेशन घट रहा है ना. व्हाट अबाउट बी, इज इट डिक्रीजिंग और नॉट? Yes, sir. व्हाट अबाउट सी, इज इट इंक्रीजिंग और नॉट? Yes, sir. व्हाट अबाउट डी, इज इट इंक्रीजिंग और नॉट? समझ में आ रही बात ये? I could have said Yes, sir. directly also, but you are very child right now. अभी तुमने शुरू किया चैप्टर, तो मैं धीरे धीरे तुम्हें करा रहा हूँ. So टाइम के साथ साथ A और B का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना. Yes, sir. तो Yes, रेट ऑफ sir. फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? Decrease. और C और D का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना. Yes, sir. तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा ना यहाँ से. Yes, sir. So Yes, now sir. I ask you something. If you have to plot a curve between rate of reaction and time, so तुम्हारे पास एक कर्व ऐसा मिल रहा है, तो ये कर्व क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटता जाएगा ना भाई. Yes, sir. Yes, sir. एंड व्हाट अबाउट बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन? ये बढ़ता जाएगा ना, जीरो से बढ़ता 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जबकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो रहा है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो रहा है ना. Yes, sir. This Yes, sir. point of time is referred as chemical equilibrium. Graphical definition. What is chemical equilibrium? At chemical equilibrium, rate of forward reaction exactly equals rate of backward reaction. Loud and extremely clear. लिखेंगे इस बात को. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टाइम के साथ डिक्रीज क्यों कर रहा है, ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया है, हम लोगों ने सीखा है पीछे. और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन टाइम के साथ क्यों बढ़ रहा है, ये हमने पहले सीखा है पिछले वाले शीट में. उसी के बेसिस पे, उसी के बिना पे मैंने लिखा है. डू वी अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. So quickly, any child will revise what is law of mass action. What is the statement law of mass action?
एनीबॉडी? अनिका तुम ही कर दो जल्दी से. Yes, sir. It says that the rate of any reaction is directly proportional to the product of the masses, which means that whatever uh, is the active mass of the species, that raised to the power of its stoichiometric coefficient. So Right. we like if the concentration of the product is decreasing and the concentration if the concentration of the reactants is decreasing and the concentration of the products is increasing, that means that the rate of forward reaction will also decrease and the rate of backward direction will increase. Right. So what is the graphical definition of chemical equilibrium? When the rate of forward reaction exactly equals rate of backward reaction, that point of time or that state of reaction is known as chemical equilibrium. Post this point of time they become exactly same. So ये line जो है एक ही दिखता है हम लोगों को, दिखा लेंगे. So this point of time is known as chemical equilibrium. समझ आ रही बात सब लोगों के? इतनी बातों को क्विकली रिवाइज कीजिए. दूसरा सेशन इमीडिएटली ज्वाइन करेंगे, 8 मिनट्स के बाद ज्वाइन करेंगे क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग रिट्रीव करना पड़ेगा अभी. मेरी बात समझ में आई? सो वी वुड बी ज्वाइनिंग एट 18:52. इज दैट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तब तक आप रिवाइज कीजिए बैठ.